subject matter of statistical investigation. For a various characteristic is known as a population, and a proper subset of population is known as a sample. Before deciding sample, we need to stick with some of the characteristics, and with the help of size. If the sample size is greater or equal to 30, then that sample will be known as a large sample. If the sample size is less than 30, then that particular sample will be known as a small sample. And after that, I had given some of the information about, not this one, some of the information related to parameters and statistics. The statistical constant related to entire population will be known as parameters. We will be labeling that particular statistical constant, those belongs to entire population. We'll label all of them as a parameter, and the same statistical constant for the sample, we guys gonna label them as a statics. Okay, so we need to have different labeling. As mean of population will be labeled as mu. The mean of sample, you guys gonna label with x bar. My voice is lagging, or I'm properly audible, because in my cell phone I'm not able to. Cell phone में तो मेरी स्क्रीन पीछे रह गई. कोई एक अनम्यूट करो तो अपने आप को. ऋषभ आयुधा, ऋषभ शर्मा. Bishop, are you there? Preet Lingmani. Preet Lingmani, unmute yourself. Hello. Hello. Yes, Rishabh. Yes, you are audible. अभी स्क्रीन के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है तुझे? पॉपुलेशन और सैंपल वाली स्क्रीन है या तो फिर पैरामीटर और स्टैटिक वाली स्क्रीन है? Terms related to test of hypothesis. Sorry? Terms related to test of hypothesis. हाँ, उसमें फर्स्ट क्या है? Parameter. Sir, parameter and statistic. Okay. Parameters and statistic. Yes, बस वही पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन पीछे रह गई. सेल फोन में जैसे मैंने यही मीट ज्वाइन की हुई है, पर उसमें Sir, am I properly audible or sir I am facing network issue, sir? You are properly audible. Right now you are properly audible. Sir, because okay, sir. Okay. Okay, good. So, as I said that we need to have a different notations. Mean for the entire population, we guys gonna label as a mu. Mean for the sample, guys will use the x bar for that particular. The standard deviation for the entire population will have the small sigma sign. Here we will be using small s. Similarly, you can identify that we need to have different notations, is it? Here also I'm dealing with the standard deviation. Here also I'm dealing with the standard deviation, but this standard deviation will be for the entire population, and this will be for the samples. Okay, and different than the 4. It might be less than 4, it might be greater than 4, but this particular parameter will not change because the mean for the entire population will be constant. वो जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि population change नहीं करेगा, is it? But we guys are choosing a sample. हम हमारा sample जो है वो अलग तरीके से choose करेंगे हर बार. So for the sample, that static will vary. For the sample, this static will vary from sample to sample. Okay. Yes, who was that? Mohammed, आपने कुछ बोला बेटा? Sir, your voice was lagging, sir. अभी lagging हो रहा है? थोड़ा सा. Let me check. Connection is powerful, and I'm delivering the session from the college, so
नेट भी बढ़िया है, आई एम यूजिंग द ब्रॉडबैंड. Let me rejoin in that case. Wait. Now am I properly audible, Mohammed? Yes, sir. Now you are. अभी लैगिंग नहीं हो रहा ना कुछ? नहीं, sir. Good. So let's continue. Sampling. What is the main purpose of the sampling? That is, the purpose of sampling is to study the characteristic of sample drawn, like mean, variance, or any of the statistic related to that particular sample, and draw inference about the population constant. Sampling का हमारा purpose क्या रहेगा? By selecting some of the different sampling, by selecting some of the different samples, the guys will try to know the behavior of the sample. They will try to collect their mean, their variance. I'm talking about all samples, is it? Once we are having all that information related to the different samples, मानी कि हमारे पास उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई उसका मीन क्या है, हर एक सैंपल का मीन क्या है, हर एक सैंपल का वेरिएंस क्या है, हर एक सैंपल का स्टैंडर्ड एरर क्या है, is it? Once we are having that, then we may draw some of the inference. That means we can predict some of the things for the entire population. This is what the pure purpose of the sampling. यही सैम्पलिंग का एक सबसे बड़ा मोटिव है कि सैम्पलिंग क्यों करना है भाई, हमको पता है पूरी पॉपुलेशन के लिए सारे स्टेटिस्टिक निकालना, सारे पैरामीटर्स निकालना, इट्स टाइम कंज्यूमिंग, श्योरली इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिकल भी नहीं होएगा. तो हम छोटे छोटे सैंपल चूज करेंगे, उसका मीन निकालेंगे, उसका वेरिएंस निकालेंगे. जो जो डेटा हमको पॉपुलेशन के लिए चाहिए वो हम मीन के लिए पूरे छोटे छोटे सैंपल के लिए कलेक्ट करेंगे. देन using that particular information from the different samples, we guys will predict, we guys will draw inference for the entire population. अगर भाई इन सभी छोटे छोटे सैंपल का मीन ये है 12 है, then we may predict mean for the entire population, is it? For that here the role will be there for the central limit theorem भी बीच में कहीं आएगा, जो कि एक्चुअली वो हमने रखा था as per the syllabus, as per the big data syllabus. उसको हमने लिस्ट आउट करके रखा है थर्ड यूनिट में. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हम पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया था. दैट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. वो यहाँ पे रोल में आएगा, किस तरीके का आएगा. सो वेट फॉर दैट, विल एक्सप्लेन दैट. बट दिस इज व्हाट द पर्पस फॉर द सैम्पलिंग इज. Let me move ahead now. As I said that in the previous session, in the morning session, that we will be having two different type of sampling. We may go for the random sampling as well as simple sampling. अब ये दो है क्या? Random sampling, simple sampling है क्या? Okay. So first is a thing related to random sampling. What we mean by random sampling? उसके नाम में, उसके जो नाम है random sampling, उसी में सारा निष्कर्ष है उसका. पर देखिए चलिए क्या है. In the random sampling, the samples are selected at random. randomly select करेंगे ना, in which the possibility of any biasness is excluded. किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम बायस नहीं है, is it? So we are selecting objects randomly in the random sampling. This is what the random sampling is. Each of the population has equal chance of being included in the sample. Each item of the population has equal chance of being included in the sample. अगर मैं बात कर रहा हूँ एक छोटे से पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन, चलिए मान लेते हैं कि भाई पॉपुलेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं एज स्टूडेंट ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन भी, yes, suppose this is my population and this population क्या लिया है मैंने, ये स्टूडेंट ऑफ मारवाड़ी.
ये पूरा है ना जो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, सपोज मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, दिस इज माय पॉपुलेशन, इसमें जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। ओके, नाउ इफ आई विश टू ड्रॉ अ सैंपल, मुझे एक छोटा सा सैंपल लेना है जिसकी साइज मान लीजिए कि 30 है, 30 स्टूडेंट का एक छोटा सा सैंपल मैं ले रहा हूँ। नाउ इफ माय सैम्पलिंग इज रैंडम, तो हर एक बच्चे का चांस इस सैंपल में आने का सेम होना चाहिए। मीन्स कि कोई एआई बिग डेटा वाला बच्चा है तो वो भी इस 30 में इंक्लूड होगा, जो पॉसिबिलिटी उसकी है वही पॉसिबिलिटी होगी कि एमबीए वाला कोई बच्चा भी इसमें सेलेक्ट हो जाए, कोई डिप्लोमा वाला बच्चा भी इसमें सेलेक्ट हो जाए। सो दिस इज व्हाट द रैंडम सैम्पलिंग इज। वी आर चूजिंग, वी आर सपोज टू सिलेक्ट आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल्स रैंडमली। कोई बायसनेस नहीं है कि भाई चलिए इंजीनियरिंग वाले, ये 30 में से 20 तो इंजीनियरिंग वाले ही होंगे और 10 वो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के हैं और फिर जो बाकी के 2-3 बचे वो डिप्लोमा से लेने, ऐसी कोई बायसनेस नहीं है, ठीक है। सो इट इज दैट पर्टिकुलर बायसनेस इज टोटली एक्सक्लूडेड एंड हर एक आइटम, पॉपुलेशन की हर एक आइटम का इस सैंपल में इंक्लूड होने का चांसेस सेम होना चाहिए। दिस इज व्हाट द रैंडम सैम्पलिंग इज, ओके, ऑफिशियली। नाउ लेट मी erase this, ये कर। Now what is simple sampling? अब ये बात हुई रैंडम सैम्पलिंग की, तो सिंपल सैम्पलिंग क्या होता है? सिंपल सैम्पलिंग ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल सैम्पलिंग इज दैट रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है। देखिए उस रैंडम सैम्पलिंग को हम सिंपल सैम्पलिंग बोल सकते हैं, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सक्सेस एंड फेलियर इवेंट्स इन द प्रेसीडिंग ट्रायल्स। कि पिछले केस में, पिछले ट्रायल में वो इंक्लूड हुआ था नहीं हुआ था, उसके लिए सक्सेस थी फेलियर थी, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। इट इज, if it is totally independent from the previous or I can say preceding trials, then that particular random sampling will be known as a simple sampling. I know I'm confusing you guys a little bit with some of the heavy words, but let me make the things clear. Am I properly audible, Mohammed? Am I properly audible or not? Yes, sir. Properly audible. So might be with this particular line, simple sampling is that random sampling in which probability of an event is independent of success and failure of events in the preceding trials. Then let me clear this with one of the examples. Just be with me. ये मैं बाद में देखूंगा, रुक जाओ. Yes, this is the example. Suppose we are having a bag जिसमें की टोटल 5 balls है, 3 white and 2 red balls are there, and out of that 5 balls 2 balls are drawn from it. We are supposed to draw a 2 balls from a bag. और bag में क्या है, let me draw the bag over here. In a bag, suppose we are having 3 white balls. Yes, these 3 are the white balls and 2 are the red balls. These 2 are the red balls. So total I am having 5 balls in this bag. Now what I am doing, and 2 balls are drawn from it. We are supposed to draw 2 balls from those 5 balls. Okay, 2 red है, 3 white है, good. Now the probability of drawing a white ball from the bag, if I'm picking a first ball from the bag, and what is the probability that particular drawn ball is of the color red, is of the color white, तो वो white का होगा, उसकी probability क्या होगी, निकलेगी, बहुत ही simple होगा, then it will be 3/5. That particular probability that first drawn ball is of the white color, it will be surely 3/5, is it? Now suppose in the first trial we draw a white ball, and then the probability of getting a white ball in the second trial. अब पहले एक बॉल निकाला, वो व्हाइट बॉल था, पहले जो मैंने बॉल चूज किया वो व्हाइट बॉल था, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/5. सपोज दैट पर्टिकुलर इवेंट इज ए, एंड अब दूसरी बार मैं बॉल उठा रहा हूँ, वो व्हाइट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब एक बॉल मैंने यहाँ से उठा लिया है, आई डिड नॉट से दैट आई हैड रिप्लेस दैट पर्टिकुलर बॉल और नॉट. सो नाउ यहाँ पे बैग में व्हाइट बॉल 2 ही रहेंगे और टोटल बॉल 4 ही होंगे. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ observe this particular line, this particular line. Now suppose the first trial we drew a white ball, then the probability of getting a white ball in the second trial when the earlier ball is not replaced. If earlier ball is not replaced, मैंने पहला बॉल जो उठाया था वो मैं replace नहीं कर रहा हूँ, बैग में वापस नहीं डाल रहा हूँ, then the probability that the second ball is also white will be 2/4, which is different than the first one. Observe here, 3/5, 2/5. क्यों? बिकॉज आई एम ड्रॉइंग अ सैंपल, मुझे सैंपल चाहिए, मुझे सैंपल लेना है, इज इट? सो मैंने एक बॉल उठाया,
उसको बाहर रखा, फिर मैं दूसरा बॉल लूंगा, उसको बाहर रखूंगा, like that ना. In that case I am not supposed to replace that ball again in the that particular ball back, is it? Which is not same as the first trial. Hence the sampling to the random is not simple. This sampling is not simple. Why? Because both that are not same. और यहाँ पे हमने क्या किया था, देखिए सिंपल में क्या लिखा है, that the random sampling in which probability of an event is independent of success and failure of events in the preceding time. आगे क्या कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए. अब यहाँ पे मैंने आगे जो व्हाइट बॉल उठाया था, it is surely going to affect on the second trial, so it is not simple. Okay, but अब अगर इसको सिंपल बनाना है, if we convert this particular sampling into the simple, then what we are supposed to do, we are just simply supposed to replace the ball back, that particular ball which I had drawn in the first trial. However, if the ball drawn in the first trial is replaced in the bag before, the next trial sampling will be simple. अगर मैं पहला बॉल उठा के वापस डाल दूंगा just observe करके, then once again if I'm trying for the second one, the second ball, तो white ball तो 3 ही रहेंगे, total ball 5 ही रहेंगे, तो उसकी probability 3/5 ही रहेगी. So this is what the simple sampling and random sampling, and usually we guys will be dealing with the random sampling. Okay, but we need to note that the random sampling need not to be simple. Random sampling हर बार simple होगी ऐसा जरूरी नहीं है. That depends के हम वो किस केस की बात कर रहे हैं, with replacement, without replacement. अगर that will depend on this. Okay, wait, let me give you one more line. Thus the random sampling from the infinite population, but I need to add one more thing over that. If we are talking about the infinite population, okay, in that particular bag we are having infinite white balls, then probability will remain same always, is it? So this is very important information. I can put to 1 or 2 MCQs from this particular line. इस पूरी स्क्रीन में से मैं 1-2 MCQ, 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से रिप्लेस कर पाऊंगा. I will give you proper time for your queries, but wait, let me finish. The random sampling from the infinite population is always simple. Mark this particular. The random sampling from the infinite population is always simple, but the random sampling from finite population may or may not be simple. यहीं पे अभी हमने देखा, देखिए अगर विथ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मैं बॉल उठा के वापस डाल दूंगा, देन इट विल बी सिंपल सैम्पलिंग. बट if I'm dealing without replacement, then that sampling will not be simple, and it will be just known as a random sampling. So random sampling की बात हो रही है. random sampling में simple sampling क्या होता है, अगर हर किसी की probability, हर किसी का chances same है, वो आगे वाले event से कोई प्रभावित नहीं हो रहा है, then that is known as a simple sampling. पर first trial के बाद second trial में उसका effect आ रहा है, then that sampling will be not simple. Yes, now you may ask your queries. Yes, Smriti was having some of the doubt. Smriti saying, sir, you are not audible. Smriti, am I audible properly or not? Yes, sir, you were not audible, but you are audible now. Okay, good. You may throw your question now. So my question was, if a sample is size is 30, which Yes. sample it would be, large or small? Exactly 30. As I said that, greater or equal 30, we will consider that particular as a large sample. Okay, sir. Thank you, sir. Greater or equal 30 will be considered as a large sample. Less than 30, if the sample size is less than 30, then we will be considering that sample as a small sample. Is it? Am I clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Good. Yes, Mohammed, you were asking something. Mohammed, are we clear with this particular random sampling, simple sampling? Sir, your voice is lagging. No, I don't think so. Smriti, am I audible properly? Yes, Agar sir. Yes, मेरी sir. तरफ if my voice is lagging, then all Yes, of you sir. will face the same issue. क्योंकि in How that will case, judge the sample is infinite or finite? sorry. जज कैसे करेगा कि सैंपल इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है? Okay. In that case, that data will be provided. We will be having that information that we are dealing with the finite population or we are dealing with the infinite population. That we are supposed to have during any of the question. Am I clear, Tushar?
क्योंकि सर जनरली देखे तो कोई भी सैंपल फाइनाइट ही होगा, एक जगह पे आके वो बंद ही होगा, उसका Yes. अपर लिमिट क्लोज ही होगा। कैसे बोल सकता है तू ऐसा? सर इन केस ऑफ नॉर्मली जनरलाइज चीजें लेगा तो फिर वो जनरलाइज चीजें लेगा तो वो एक फाइनाइट पोजीशन पे जाके क्लोज हो गए उसका अपर लिमिट। हाँ हो सकता है, बट इफ दे आर टॉकिंग दैट पॉपुलेशन इज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन द रूम, If we are taking of something like a sample of water and that can be infinite, but एक normally generalized चीज को लेगा तो वो finite ही होगा ना। सही सही सच सच बात है बेटा, बट it is not like that कि always we will be dealing with the finite population. We may have the examples on the infinite population also. Suppose I am considering population as a number of bacteria in the room, the number of trees on the earth, is it? So in that case, that population will be considered as infinite. But don't worry about that. That data will be having, that information will be having once we are dealing with one of the example. Okay. So don't worry about that. That will be crystal clear while we are dealing with some of the examples. Am I meaningful, Tusha? Are you getting me Yes. properly? Good. So let me continue further. We had already discussed this. Okay. इसमें कुछ problem है. Now we need to switch over to the sampling distribution, but before that, before going for the sampling distribution, let's discuss 2-3 things. Read this particular for me. Quite often, the parameter value are not known. Parameters values are not known. What we mean by parameter here? यहाँ पे जो पैरामीटर मैं लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? The statistics of population. Instead of using that particular word statistic, can you use the statistical constant? Yes, sir. Some Statistical statistical constant or constants related to population. Very good, Smriti. So I'm talking about the statistical constant related to the entire population. Suppose I'm considering the Marwadi University as a student of Marwadi University, the group of Marwadi University students as a population, and I'm not aware about the mean related to the height. Okay, so it's quite often the parameters values are not known. ज्यादातर नहीं पता रहती हमको कि भाई पॉपुलेशन के लिए मीन क्या है, नहीं पता है, पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, नहीं पता है. And the statistic obtained from the samples are used to analyze the population. So हम क्या करेंगे, ये जो population हमारे ये जो statistical constant हमारे पास नहीं रहेंगे population को, उसको हम identify करने वाले, analyze करने वाले किसका use करके? Using the statistics. Now here the word statistic means the statistical constant related to the sample. So sample का mean है मेरे पास, पॉपुलेशन का मीन मैं एनालाइज करूंगा. सारे सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है, आई एम गोना एनालाइज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू. दिस इज and this is what the problem we will be facing more often, that the parameters related to population will be not known, will be unknown. Not that the statistics obtained from the different samples can vary from one sample to another. As we discussed in the previous slide, कि हर एक सैंपल की स्टैटिस्टिक्स वेरी कर सकती है. पक्की बात है, पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिक एक ही है, पर हर एक सैंपल, जैसे मैं सैंपल अलग चूज करूं. Let me give a brief example for that. Suppose we are considering that suppose we are studying, we are preparing a report on the height of Marwadi students. Height of Marwadi students. And we are considering our population as a Marwadi university. And for that particular analysis, we are drawing, suppose 5-6 different samples. These are the 6 samples, and each of the sample is having 10 students. मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे हैं उन सभी के हाइट के ऊपर कुछ सारे जो फिगर्स है, सारे उसका स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट है, वो कलेक्ट करना चाहता हूँ. So instead of dealing with each and every student's height, what I'm doing, I'm drawing 5 different samples.
in each and every sample I'm choosing 10 students. अब ये 10 बच्चे जो है वो सपोज कि मैंने इंजीनियरिंग में से लिए है, ये 10 बच्चे मैंने डिप्लोमा में से लिए है, ये 10 बच्चे मैंने सपोज कि एमसीए में से लिए हुए. This 10 students are from the science stream and these are from the architecture, suppose. So for each and every this sample, for this 5 samples, surely their mean related to the height will differ. हो सकता है कि इस सैंपल का मीन जो है वो 160 सेंटीमीटर है, हो सकता है इस सैंपल का मीन जो हाइट का that is 170 सेंटीमीटर. Suppose might be in the science stream we are having taller student, तो उसका mean आ रहा है that is 175 centimeter. It's quite possible. So what I had just mentioned over there, observe this. Not that the statistic obtained from the different samples can vary from one sample to another. अब मैं जितने भी अलग-अलग सैंपल लूंगा उसके सारे स्टैटिस्टिक्स डिफर करेंगे, पक्का डिफर करेंगे, surely. So here is the problem we guys will gonna face. One vital problem of sampling theory is to find out whether this variation in the statics of the sample, this particular variance, देखिए here we are having variance, यहाँ पे 170, यहाँ पे 160 है, यहाँ पे 175 हो सकता है कोई एक स्ट्रीम में बहुत नाटे बच्चे, यहाँ पे 145 सेंटीमीटर उसका मीन आ रहा है. So we are having variation, is it? So whether this variation in the static माने कि कोई भी अभी हम बात कर रहे हैं मीन की, वो हो सकता है हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, हो सकता है हम बात करें वेरिएंस की, ठीक है. So here the static means we are talking about the mean. This variance in static of the sample, which may be due to fluctuation in the sampling process, but this variation are significant or insignificant. This is what the biggest problem. This is one of the vital problem we will be facing. Whether this particular variance is valid or not. अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? वो डिसाइड करने के लिए तो हमारे पास तकनीक है कि देखिए, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस पर्टिकुलर, जब मैंने कि अभी जो बात की थी जिसमें से 10 बच्चे मैंने इंजीनियरिंग में से लिए थे, फिर 10 दूसरे सैंपल में आई हैड चूजन पर्सन फ्रॉम द एमबीए, इन द थर्ड सैंपल आई हैड चूजन द पर्सन फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम माइट बी. Now, instead of selecting samples like that, I may choose my sample like that. 10 सैंपल जो मैं बना रहा हूँ, 5 सैंपल बना रहा हूँ, यहाँ पे अगर 10 बच्चे लेने हैं, if I need to include 10 students over there, then it's quite possible. 2 मैं यहाँ से लूँ engineering के, 2 next 2 from the science stream, next 2 from the MBA, next 2 from the architecture, and next 2 from the law. Is it? If I'm preparing my all 5 samples like that, then one can easily identify this will be more suitable. This kind of samples will be more suitable. Am I audible? Who's that? Hello? Am I properly audible to all of you? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this is what Yes, I one of the biggest problem we guys will gonna face, and we will be deciding whether that particular is significant or insignificant. So सारी बात आके खत्म होगी कहाँ पे? Confidence interval पे. What I'm trying to do, I'm trying to trace all of you towards the confidence interval. So wait, I discussed one of the example while I delivered the session related to the normal distribution. अगर किसी को याद हो वो normal distribution वाला, मैंने एक example लिया था, किसी एक को आपके क्लास में से किसी एक को गोल्ड का सेलर बनाया था, किसी एक को बालाजी वेफर का सेलर बनाया था, और फिर बात कर रहे थे कि भाई कोई एक बालाजी के पैकेट में अगर 5 ग्राम का वेरिएशन है then it is okay. बट अगर गोल्ड बिस्किट में 0.5 ग्राम का भी डिफरेंस है, फ्लक्चुएशन है, तो नहीं चलेगा ना. तो वहां पे हमने कुछ बात की थी भाई कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होना चाहिए. यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल काफी कम सेट करना है मुझे, यहाँ पे वो थोड़ा बड़ा है तो भी चलेगा. सो हियर वी आर अलाउड 10% एरर, तो भी हम अलाउ कर रहे हैं. यहाँ पे 0.10% एरर है तो भी अलाउ नहीं कर सकते. So this is what I'm trying to trace all of you towards that particular. But before that, we need to discuss one or two things yet, please. Let me tell you what is a sampling distribution. Sampling distribution of a statistic. अब once ध्यान रखिए, देखिए, when I'm using this particular statistic, is it? Might be I'm talking about mean, might be I'm talking about variance. ये मैंने तीसरी चौथी बार अभी आपको बताया, is it? So यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि सर what we mean by a statistic.
Okay, sampling distribution. Now, let's have one of the example. Consider the population of size n. Population size को n लेते हैं, and I'm supposed to draw r samples from that. इस n पूरी n size की population में से मुझे r samples निकालने हैं. R number of samples are supposed to be drawn through random sampling. We are using random sampling for that, and each of size n, ये सारे r जो samples हैं तो सभी की size n है, n size. मानी कि फर्स्ट सैंपल में n ऑब्जेक्ट्स है, स्मॉल n ऑब्जेक्ट, सेकंड सैंपल में स्मॉल n ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे मैंने कितने सैंपल्स निकालने हैं r. नाउ वी कंप्यूट सम स्टैटिक t, उसके उस सारे सैंपल्स के लिए हम कोई एक स्टैटिक कैलकुलेट करेंगे. सपोज कि वी आर मीन, वी आर ट्राइंग टू कंप्यूट मीन और वेरिएंस. सो व्हाट आई रिटन ओवर दैट, नाउ वी कंप्यूट सम स्टैटिक से t से उस स्टैटिक को जस्ट मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ t. हो सकता है वो मीन भी है, हो सकता है वो वेरिएंस भी है, फॉर ऑल आवर सैंपल्स. नाउ if I'm having that particular data related to mean for all our samples of the size n, then I may represent that particular in the table. और वो जो टेबल बनेगा ना, उसकी जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, the table with the frequency will be known as a sampling distribution. उसको हम बोलेंगे sampling distribution. हम क्या है, the value of the static t can be put in the frequency table. उसको लेके एक frequency table बना सकते हैं, and this data of value t, where what is t? T is one of the static, हो सकता है वो mean है. This data of value related to mean is called sampling distribution of mean. If this t is mean, then we can say sampling distribution of mean. If this t is variance, then we can say the sampling distribution of variance related to that particular population. Okay, so how we can do that? Let me show you. Up to next slide. Yes, suppose let's deal with one of the simplest example. किसी का कॉल आ रहा है, रुक जाओ. अरे भाई कहाँ गया? Yes, here it is. Just give me 1 minute. Yes. Read the question properly. Let the population consist of 5 number. I'm giving you 5 number in the population, that is 3, 5, 7, 8, 9. Sorry, 3, 5, 7, 9, 11. If random samples, each of size 2, small n equals to 2, are selected without replacement, this is important, then find the sampling distribution of the sample mean. देखिए पहली बार आप you are interacting with such instruction first time, so kindly be focused, kindly be with me, try to understand each and everything. In the population I'm just having 5 numbers. छोटा सा population है एक मेरा. I'm not clear what are these numbers means. हो सकता है किसी का weight है, हो सकता है किसी का income है, कुछ भी है. We are not worried about that. In this particular population, we are having just 5 numbers. That is 3, 5, 7, 9, and 11. That's all. This is my entire population is. छोटी सी population है. But what we are supposed to do? We are supposed to pick samples from this population. अब जो samples लेने हैं ना, वो उसकी size दे रखी है. Each of size small n equals to 2. मानी कि sample मेरा ये हो सकता है 3,5. This is my first sample. It might be my second sample is 3,7. It's totally possible that my third sample is 7,9. It's totally possible my other sample is 3,9. Is it like that? We are supposed to pick samples. Now what they're asking from us, find the sampling distribution of the sample mean. Now as I say that we are looking for sampling distribution. Now what we mean by sampling distribution, अगर मैं अभी पिछली slide में जो हमने बात की थी, sampling distribution means we need to have one of the table in which we'll be dealing with that particular static, and that static right now, that static is mean for the sample with that frequency, कि उसकी frequency क्या है. So we guys will prepare that particular table now. Now first of all, can you decide how many different samples we can pick from this particular population? कोई बता पाएगा मुझे इस population में से मुझे
मैं कितने सैंपल्स ले सकता हूँ जो कि अलग अलग है, डिफरेंट है. What you need to consider, the sample size must be 2. Sample size must be 2. बता पाएगा कोई मुझे कितने अलग अलग सैंपल्स में ले सकता हूँ इसमें से? If this is my population, then how many different samples I can take from this particular? How many different samples I can take from this particular population? Who will help me for that? What I need to have sample first, then after, yeah, sample units बोल दूँ उसको, sample units. Then after we'll be finding its sample mean, and then we will be finding some of the probability distribution. Okay, good. चलिए अलग अलग जितने भी सैंपल, चलिए कोई बात नहीं, if you cannot decide instantly, then let's try to pick first sample. चलिए बताइए first sample क्या हो सकता है इसमें से? We are just supposed to pick any two numbers randomly. चलिए, who will help me? Pranjul, Rishabh, Nidhi, Meghna, Riddhi, Vidhi, Nikita. Am I audible to all of you? लगता है नहीं सुना दे. Yes, sir. हाँ Yes, तो sir. चलना, चल बात कर. चल पहला सैंपल उठा ले, कोई दो नंबर रैंडमली पिक कर ले. 7 and 11. 7, 11, यस करेक्ट. साथ ही में जाना तो हमको सारे लिस्ट आउट करने. चल पहले मैं आपकी हेल्प कर दूँ. 3, 5 रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है, देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, once I picked the 3, then I cannot pick 3 once again. So 3, 5, this is my first sample. It's totally possible. It's quite possible that my second sample is 3, 7 or 3, 9 or 3, 11. Is it? Once I'm having a sample 3, 5, then 5, 3 is meaningless. It will be literally same sample, is it? तो यहाँ पे order मायने नहीं रखेगा. So this is my first 4 sample. अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखिए चलिए. Can I pick 5, 3? No, उसका वो तो meaningless. 5, 7. Yes, 5, 7. Yes. 5, 7. 5, 7. 5, 9. 5, 9. 5, 9. Yes. 5, 11. 5, 11. Correct. Then after 7, 7, 9. 7, 9. 7, 3, sorry. 7. 3, 7, 7. 7, 9, 7, 11. 7, 11. And one more. 9, 11. 9. Correct. अब देख काउंट कर ले, ये 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These are the only 10 different samples we may pick from this particular population under this particular condition, that sample size must be 2 and without replacement. Is it? Now, this is very, very easy for you guys. Can you give me the sample mean for the first one? If both these are the sample values with us, 3, 5, then what will be the mean? Surely it will be 4. Is it? 3 plus 5 divided by 2, it will be 4. That will be the sample mean for the first sample. Yes or no? Yes. 3, Yes. 7. The mean will be 5. 5, 3, 9. 6. 6, 4, 3, 11. 7. 7. Good. 7, 5. 6. Again. 9, 5. 7. 9, 5 will be 14. So the mean will be 7. This will be 8. 7. Sorry? 8. Again 8. 8. This will be 8. 7, 11 के लिए क्या होगा? 18. So it will be 9. And for the last one, it will be 10. Is it? 10. So these are the information related to the sample mean. अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? This is what? This is my statics related to sample. Is it? Now what we are looking for? We are looking for sampling distribution. तो ये क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे sampling distribution है भाई. ये और कुछ नहीं है. This is what the sampling distribution is. And one more thing we may add. We may add the frequency over there. So let's try to add the frequency over there, or we may represent that like उसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं. देखिए किसे, अरे यार कंट्रोल Z तो नहीं होगा, चलिए मैंने, पर इट्स ओके. चलिए I may express this particular like this also, frequencies of that, frequency and x bar. अब जितनी भी अलग अलग x की वैल्यूज थी, yes, that was 4, 5, 6 आया था एक बार, 7 was there, 8, 9 and last के लिए 10 आया था ना मीन.
I'm picking frequencies randomly. Suppose this was 1 1 and 2 2, 8 के लिए भी 2 था, 1 5 6 7 8 2 9 एक ही बार आया था और 10 भी एक ही बार आया था. So if I'm gonna prepare a kind of table with static related to the sample and its frequency, then such table will be known as a sampling distribution, nothing else. Sampling distribution. Now this will be known as sampling distribution for mean x bar. Sampling distribution of the mean x bar. The similar way you may prepare the table for the sampling distribution of the standard deviation, sampling distribution of the variance. Is it? पता है हमको variance अगर find करना है तो क्या होता है? Variance के लिए क्या formula है? Variance is 1 by n summation x minus x bar the square. Is it like that? So we'll be dealing with that variance, sampling distribution with the variance, sampling distribution with the standard deviation. वो भी हम करेंगे. But I think we are running out of time. It's already 1:58. Okay. First of all, without moving for the second one, please let me know if there is any query related to this question कि sampling distribution क्या होता है, किस तरीके से काम करना है. अगर ये इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, जल्दी से. चलो fast. Are you good with this? Are you good with this? Okay, fine. Okay, fine.